Hello everyone, my name is Sanjeevni Patwa and I am Assistant Professor in CSE SIRTE Bhopal, and now today I am delivering a lecture on the topic of prototype model, which is the topic in the software engineering subject. So now let's start from the prototype. So what is the prototype? And prototype is the process of quickly putting together a working model in order to test various aspects of a design. So basically, it is a process where we have to design and prepare a model for any type of the project. Before development, we have to design a working model for checking or testing the various aspects of a design where we can test all the functionality of that project. So a prototype is an early sample or model built to test a concept or process or to act as a thing to be replicated or learned from. So if we see the example, whenever we want to create or develop any type of the aeroplane, if we see an example, so first of all we have to design the model, and after that prepare a working model, how it is working. So after testing all the functionality and the all aspect of a design, then if the project is working properly, so we will proceed further for the development. So basically it is the process which is have to be done before the development of any project or any software. So a prototype is a model or a program which is not based on strict planning, but it is an early approximation of the final product or software system. Means we can do a planning, but not the strictly, but it is an approximation. It is an approximation how it is work, how does it works, all the aspect of designs. So this is the diagram of prototype model. So we can see in the screen, first of all, this is a initial requirement, and then the arrow goes to the design part. First of all, we have to we have to analysis all the requirement of that project. पहले हम requirement gathering करते हैं, then design, and then prototyping. After designing, we have to done the prototyping, means model prepare करते हैं, then customer evaluation. After customer evaluation, if the customer is satisfied, so we will proceed for the further for the development. But if the customer in the testing and after the prototyping model, अगर customer satisfied नहीं है, then it will goes to the review and updation and other, and after that redesign will be happen, and after the redesign prototyping फिर से update की जाती है, then customer evaluation होता है. अगर customer then अब satisfied है तो development होता है, then development के बाद testing phase होता है, then maintenance phase होता है. Okay, so now these are the steps of prototyping model, and first step is to requirement gathering and analysis. Before doing the any type of the project creation, first of all, it is our first phase to requirement gathering and analysis. A prototyping model begins with requirement analysis, and the requirements of this system are defined in detail, and the user is interviewed in order to know the requirements of the system. आप सभी जानते हैं कि अगर हम कोई भी प्रोजेक्ट प्रिपेयर करने वाले हैं तो हमारी फर्स्ट स्टेप जो होती है वो रिक्वायरमेंट गैदरिंग होती है, एंड इट इज द यूजर इज इंटरव्यूड इन ऑर्डर टू नो द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सिस्टम. रिक्वायरमेंट जितनी भी होती हैं उसका एक सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है, जिसमें सभी टाइप की रिक्वायरमेंट्स, फंक्शनल, नॉन फंक्शनल, यूजर, सिस्टम, जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो रिक्वायरमेंट उन सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट में लिखी जाती हैं. उसके अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन प्रिपेयर होता है. अब जो भी डिज़ाइन प्रिपेयर हो रहा है वो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट से ही मैच करके किया जाता है, उसमें कोई भी चेंजेस डिज़ाइनर अपनी तरफ से नहीं कर सकता है. सो नाउ नेक्स्ट फेज इज द क्विक डिज़ाइन. व्हेन द रिक्वायरमेंट्स आर known, a preliminary design or quick design for the system is created. After gathering the requirement, the second phase is the quick designing. जब requirement मिल जाती है तो उसके बाद एक quick design prepare किया जाता है. It is not a detailed design, however it includes the important aspect of the system which give an idea of the system to the user. एक basic design prepare किया जाता है. It's not detailed designing,
जहाँ पे जो भी सिस्टम है उसके जो बेसिक नीड है, उसकी जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, उनको डिजाइन किया जाता है। जैसे कि अगर कोई आप शॉपिंग ऐप बना रहे हैं या वेबसाइट बना रहे हैं, तो उसमें जो भी उसके मेन एस्पेक्ट होंगे, यूजर, एडमिन, रजिस्ट्रेशन, पेमेंट, गेटवे, दिस टाइप ऑफ द मेन एस्पेक्ट को डिजाइन किया जाता है। नाउ बिल्ड प्रोटोटाइप. Information gathering from quick design is modified to form a prototype. It represents a rough design of the required system. So इसके बाद प्रोटोटाइप बनाया जाता है. इंफॉर्मेशन गैदरिंग फ्रॉम क्विक डिजाइन के बाद एक मॉडल प्रिपेयर किया जाता है. इट इज अ रफ डिजाइन ऑफ द रिक्वायर्ड सिस्टम. सो नाउ नेक्स्ट इज customer evaluation. And after delivering, the system developer needs to provide training about how to use the system. This activity is supported by customer evaluation, and if any changes are found, then app updation is done. आफ्टर बिल्डिंग द प्रोटोटाइपिंग, कस्टमर से इवेल्युएट किया जाता है. अगर कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होता है उसके प्रोजेक्ट से, उसके मॉडल से, तो फिर से उसे रिव्यू किया जाता है, अपडेट किया जाता है. अदरवाइज ये डेवलपमेंट टीम के पास कर दिया जाता है. सो नाउ नेक्स्ट phase is the review and update, and there might be also change in the input data or system environment. All these require modification of software. And now after customer is satisfied, final design and further process is carried out. And this model doesn't include all the features but provides client basic idea about the proposed system. So basically, if we see the example of the aeroplane designing, so we know that the aeroplane has a lot of features which we know, which we are not knowing about that, but the main aspect we know about, we knows about the flying activities, brake activities, and running activities. These are the basic activity of the aeroplane. If we are see the example of that, ये एक बेसिक जो उसकी मेन जो एस्पेक्ट होते हैं उनको ही प्रिपेयर किया जाता है प्रोटोटाइप में. सो नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट the need of prototyping model. So basically, a prototype model is made completely built. Sample model is shown to user and based on his feedback, and it is a model of where we can see and check all the functionality of that project. And prototypes are an essential part of the design process, realizing design in a physical form. And we can see the whatever you have done through the designing and what will be happening in the terms of the development. So हम पहले ही डिजाइन मॉडल के थ्रू हम ये जान लेते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो किस तरीके से वर्किंग करने वाला है. सो इट इज अ फिजिकल फॉर्म. ये फिजिकल फॉर्म का जो होता है प्रोटोटाइपिंग होती है. नाउ दिस इज बेनिफिशियल इन प्रूविंग वेदर अ न्यू प्रोडक्ट इज वायबल इन द टर्म्स ऑफ इट्स मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिकल एंड ergonomic design. And having a working prototype demonstrates the benefits of your idea to industry and in a convincing way to help inspire confidence in the idea. सो बेसिकली हम प्रोटोटाइप मॉडल की नीड क्या होती है कि जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट पर हम वर्क करने वाले होते हैं तो उस टाइम हमें एक वर्किंग मॉडल की जरूरत होती है. बिफोर आप सभी जानते हैं कि देयर आर लॉट ऑफ आइडियाज टू डिजाइन प्रोटोटाइप, बट in the designing phase we choose the very shortest method for designing the prototype model. Thank you so much everyone for watching my video.